स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। इस पवित्र 8 वैदिक ऋचाओं का पाठ करने के पश्चात हम यज्ञ की अगली प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बालिका का जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं और दूसरी ओर यजमान परिवार आने वाला है, उनकी भी बिटिया का जन्म दिवस, आरुषि का और आशा का। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, स्वस्थता निरोगता से दीर्घायु को प्राप्त करके ये अपने जीवन में आगे बढ़े। ऐसी मनोकामना के साथ आइए संकल्प हेतु थोड़ा सा जल राइट हैंड में लेंगे। टेक वाटर इन राइट पाम लिटिल बिट एंड रिपीट माय सेंटेंस। आई विल स्पीक। ओम अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अंद्रितात् सत्यम उपैमि। हे व्रतों के स्वामी परमेश्वर, आज हम श्रेष्ठ मनोकामना से युक्त होकर पवित्र अग्नि देवता का आवाहन करते हुए श्रेष्ठ कर्म को संपादित करेंगे। हे प्रभु, हमारी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप पूर्ण करो, अपने आशीर्वाद की वर्षा करो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। छोड़ दो, छोड़ दो। टेक अनदर टाइम फॉर आचमन आफ्टर स्वाहा सिद्धि। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। सेकंड टाइम। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। वॉश योर हैंड बैक साइड, बैक साइड बता छोड़ना, बैक साइड। टेक वाटर इन लेफ्ट palm for anga sparsha. Left palm. Asha, look at me. Take water in left palm. Okay. And right hand, middle and ring finger, both finger. Touch lightly. Om Vangma Asyastu. Om Nasorme Pranastu. Om Akshnor में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उरोर्मा ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। दीपक प्रज्वलन, शिया जलम। ओम भूर्भुवः स्वः। सेकंड ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याया दधे। Hold your hands. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे कामयं च
अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. Take one Samhita and offer after Swaha. You touch your right hand. Happy. ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. सेकंड समिधा. ओम समिधाग्निं दुवसतघृतैर्बोधयथातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना. ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं ते प्रम्जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचा यविष्ठय स्वाहा इदमग्नैर्ग्रसेदन्न मम. Next mantra we will chant 5 times. You offer ghee on them. Om ayam tayitma atma jat vedasteni dasvardhasva cheta vardhaya chasman prajaya pashuvir brahma varchase nanadena samidhaya स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेनि धस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेनि दस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम अयं तयित्मा आत्मा जातवेदस्तेनि दस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम. ओम अदिते अनुमन्यस्व. ओम अनुमते अनुमन्यस्व. ओम सरस्वती अनुमन्यस्व. ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु. Corner to corner, make line, waterline. Wait. चम्मच उठाएंगे. फर्स्ट आओ थी लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड, दूसरी राइट साइड, बाकी सेंटर.
ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाये दन्नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते दन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राये दन्नमः। घी वाले घी डालेंगे, बाकी सामग्री का प्रयोग करेंगे। आशा यू ऑफर सामग्री, यू नो हाउ टू ऑफर, टेक दिस लाइक दिस, ओके, गिव मी दैट पॉट, सामग्री का प्रयोग। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाये दन्नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाये दन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाये दन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरास्तुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निर्विद्वान् यूयोर्धस्मज्जुराणेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। Hold your hand and repeat my sentence after me. Om Vedami Paramam Chakshuh Vedami Paramam Balam Vedami Paramam Dhama Vedami ब्रह्मचोत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आइए इसी परम धर्म का हम प्रति रविवार सभी मिलकर के यहाँ पालन करते हैं। आज इस रविवारीय साप्ताहिक यज्ञ के अंतर्गत हम सभी इस परिवार के जन एकत्रित हुए हैं। यजमान पद पर बैठे हुए यजमाना जी का 5वां जन्म दिवस है, अर्थात वो 5वां अपना जन्म दिवस मना रही है, आशा जिसका नाम है। और हम परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वह स्वयं अपने लिए प्रार्थना करे कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो। जिस बुद्धि की याचना हमारे ऋषि मुनि सभी करते थे,
या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते। श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त कर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, श्रेष्ठ कर्मों करने वाली बनूं और अपने सभी का नाम उज्जवल करने वाली बनूं, ऐसी कामना करते हैं। और छोटी सी बिटिया आरुषि, जिसका प्रथम जन्म दिवस हम मना रहे हैं, उसके लिए भी स्वस्थता निरोगता की श्रेष्ठ बुद्धि की याचना हम करते हैं। आइए दोनों बालिकाओं के लिए हम प्रार्थना करें, दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करें और सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की याचना लेकर प्रार्थना करेंगे। 3 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय और जन्म दिवस के कुछ विशेष मंत्रों का हम पाठ करेंगे और साथ में आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। जन्म दिवस के विशेष मंत्र का हम पाठ करेंगे, साथ ही आशा की माता उस मंत्र का अर्थ भी साथ में बोलेगी। माइक की व्यवस्था कर दीजिए। ओम सिंचन्तु मरुतः सम्पूषा बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिंचतु प्रजया च धनेन च दीर्घम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। Vital air, nourishing earth, food digesting energy, juice-giving water, and the balance maintaining diet may make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of my kith and kin in wealth and prosperity. ये आशा की ओर से आपका अर्थ बोला जा रहा है। आशा स्वयं प्रार्थना कर रही है और हम सभी मिलकर उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड मंत्र। ओम शतं जीवः शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तात् शतमु वसन्तात् शतमिन्द्राग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। Happy to see 100 autumns, 100 springs, दूसरा and 100 summers. May we peacefully live a full and long life. ओम त्रायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं स्वाहा। Devotees, learned ones, and performers of good deeds have experienced profound joy in their childhood, youth, and in old age. May we also enjoy such sound health in all 3 stages. ये सभी अपने स्थान पर बैठकर दोनों हाथ यजमानों की ओर बालिका की ओर करें और प्रार्थना करें। आशा दोनों हाथ जोड़ो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् दीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। सभी बोले हे बालिके त्वं जीव शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम् त्वं आयुष्मती वर्चस्विनी तेजस्विनी भूयाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। I request to all come and offer your oblation. सभी निवेदन है एक एक करके दो दो की संख्या में आए और पवित्र गायत्री मंत्र की ऋचा का पाठ करते हुए आहुति प्रदान करें। आपको भी कंटिन्यू छठा 5 साल की पूरी होगी ना। ठीक ओके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी एक स्वर से उच्चारण करेंगे, साथ में गायत्री मंत्र का पाठ भी करेंगे। आशा ये दोनों गायत्री मंत्र रिपीट। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। First left side, second right side, another middle. First out after swaha right, second swaha right, first left, the second right. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Dannamama. Om Somaya Swaha Idam Somaye Dannamama. Om Prajapate Swaha Idam Prajapate Dannamama. Om Indraya Swaha Idam Indraye Dannamama. Om Bhuragnaye Swaha Idam Agnaye Dannamama. Om Bhurvaive Swaha Idam Vaive Dannamama. Om Swaradityaya Swaha Idam Adityaye Dannamama. Om Bhurbhuvah Swaragnivaya Vadityebhya Swaha Idam Agnivaya Vadityebhya Dannamama. Om Yadasya Karmanotyaricham Yadvanyunamihakaram Agnishtashrishta Pridvidyat Sarvam Srishtam Sotam Karotu Me Agnaye Srishta Krite Sota Ute Sarva Prayaschitta Utinam Kamanam Samardhayitre Sarvanna Kaman Samardhaya Swaha Idam Agnaye Srishta Krite Dannamama. Om Swaha
इदं प्रजापते दंडमम। लास्ट 3 ऑपरेशन विद सामग्री। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये जो प्रार्थना मानसिक बल दीजिए। सत्य को धारण करे हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाई यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन पाप त्याग की। से करना लाभकारी ओ हवन दिए। वायुजल सर्वत्र शुभ बंध को धारण किए। स्वार्थ भावनिते प्रेम पद विस्तार हो। इदं मम एकमेव व्यवहारे प्रेम हो कर रही नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही। पूजनीय प्रभु हमारे आगु किए। पूर्ण देवे सल कपट को दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण।
हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथि कहो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी के लिए मंगल कामना के रूप में कुछ पंक्तियां साथ में गुनगुनाए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय, मेरे भगवन पूरी होय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आइए सभी मिलकर अपने स्थान पर बैठकर अपने शब्दों में प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। एक पोस्चर बना ले अपने शरीर का, चाहे ऊपर बैठे हो या नीचे, जिसमें आपको पोस्चर बार बार बदलना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर लो। एक आसन ग्रहण करें। शरीर को अगर कोई दुविधा ना हो तो सीधा रखे, भी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोदी में या घुटनों पर, जहां आपको सुविधा हो रख ले। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें।
मन एव मनुष्याणां कारणम बंधन मोक्ष। हमारा ये मन है जो जड़ होते हुए भी हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन वास्तविक इस मन को हम अपने अनुसार चलाए तो ये हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। और इसके अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बंधन की ओर ले जाता है। तो हम सभी साधक परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा इस मन के हम अपने वशीभूत करते हुए अपने अनुसार इसको चलाने का प्रयत्न करेंगे। इसका अभ्यास करें, मन को एकाग्र करने का। और 3 बार लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े। 3 times take deep breath, inhale slowly and exhale slowly also। कोई विचार नहीं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कोई बातचीत नहीं। सारे संसार के लिए हम कितना समय देते, दूसरों के लिए बहुत समय हम व्यतीत करते, लेकिन स्वयं के लिए भी थोड़ा सा समय अवश्य नहीं वो प्रतिदिन निकालें, जिसमें आत्मचिंतन परमात्म चिंतन हो। ऐसी अवस्था प्रतिदिन धारण करें। इस पोस्टर में बैठे। आइए, प्रार्थना कैसी हो, परमात्मा के चरणों में निवेदन कैसा हो, तो इसका छोटा सा सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी मन में भावना लेकर सभी के लिए मंगल कामना के रूप में आज जिस प्रयोजन को हम लेकर आए हैं, इस स्थान पर हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो, बौद्धिक आनंद हमें प्राप्त हो, सामाजिक आनंद हमें प्राप्त हो, सभी प्रकार के आनंद से हम ओतप्रोत हो, ऐसी भावना लेकर हम आए हैं। जिन परिवारों में शुभ अवसर है, आरुषि का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, आशा का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, अन्य सभी परिवार के जो ओकेजन है उनको भी हम मनाते हैं। आइए, सबके लिए मंगल कामना, ईश्वर के चरणों में निवेदन। 3 बार ओम नाम का जप कर दीर्घ श्वास भरते हुए ओम नाम का स्मरण करेंगे छोड़ते हुए, और तत्पश्चात मन ही मन प्रार्थना दोहराए। आप सबकी ओर से छोटी सी प्रार्थना में ईश्वर चरणों में अर्पित करता हूँ। त्वं हिनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविः, अदाते सुम्नमीमहि, अदाते सुम्नमीमहि। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाती, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप सत्य चित आनंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र,
और सृष्टि के कर्ता हर्ता। हे जगत पिता परमेश्वर, आप तो अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती, प्राणी मात्र की, जीव मात्र की संपूर्ण श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते। आपके आंचल में उचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगत पिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपके अमृतमय गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हमसे दूर कर दे। हे परम पावन प्रभु, हम सभी लोगों में जो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, जैसे कि क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हे परमपिता परमेश्वर, आज हम इस परिवार के सभी सदस्य जन एकत्रित होकर पवित्र अग्नि देवता का आह्वान करते हुए श्रेष्ठ मंत्रों के साथ स्वाकार की ध्वनि के साथ घृत की सामग्री की आहुतियां प्रदान कर रहे। हे परमपिता परमेश्वर, इदन मम की भावना के साथ हम इन आहुतियों को प्रदान करते हुए आपके सर्वज्ञता का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि आप ही तो इस संसार के रचयिता हो, पालन करता हो, सहार करता हो। सभी जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रख करके उसके अनुसार फल प्रदान करते। हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी को बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को परे करते हुए वेदोक्त मार्ग पर जो आपका बताया मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो। जिस बुद्धि की याचना हम कर रहे हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, वो इसीलिए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान सके। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर् मां अमृतम गमय के पद का अनुसरण कर सके। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो कि सत्य सत्य का निर्णय कर सके और सत्य मार्ग पर चले। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके पुत्र है, पुत्रिया है, बालक है, बालिका है। आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, कृपा करके हे कृपा सिंधु, हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को कृपा करके आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी आज के यजमानों के लिए आशीर्वचन के रूप में मेरे साथ एक वाक्य को दोहराएंगे। बोलिए, ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। दोनों तरफ से यजमान बैठे थे। एक तरफ से मुक्ता जी अपनी बिटिया का 6वां जन्मदिन मनाते हुए उनके लिए कामना कर रही थी। एक तरफ से प्रमिला जी अपनी पोती के लिए, आरुषि के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये दोनों यजमान जिस मनोकामना को लेकर इस प्रांगण में आए, अग्नि देवता के अंदर आहुतियां दी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब दोनों बालिकाओं के लिए बोलेंगे, हे बालिके युवां तेजस्विन्यौ वर्चस्विन्यौ आयुष्मत्यो यशस्विन्यौ भूयास्ताम। दोनों बिटियाओं के लिए कि दोनों स्वस्थता से, निरोगता से युक्त हो, परमात्मा इनको श्रेष्ठ बुद्धि दे, ऐसी कामना के साथ बोलिए, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं
प्रब्रवाम शरदः शतमदीनां श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शता। ओम शांति शांति। आगे संचालित के द्वारा आगे की कार्य करते हुए Namaste, everyone. Almost afternoon, good morning, and welcome to Temple on this beautiful Sunday. I know it's a bit warm outside, so I'm glad everyone came. So, before we start, as we start, our first program is going to be a bhajan. We can start with Gulati ji. Gulati ji, we have your bhajan. हे ज्ञानवान भगवन सबको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन सुलझा सके हम अपने जीवन के उलझनों को। सुलझा सके हम अपने जीवन के उलझनों को। जीवन के उलझनों प्रज्ञा प्रीतम राशि बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन
हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। Much for that wonderful bhajan, Kulati ji. I think one of the most important things while singing is the emotions you feel and the emotions you sing with. And we could all see that Kulati ji was singing with emotions in his heart, with devotion. Next, we have a bhajan by Ushant Bhajan. आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग खोवायो पायो जी मैंने ओम रतन धन पायो जी। अरे जीवन लागे कोई
चोर तेरी खर्च न लागे कोई लेकिन सब आयो पायो जी मैंने I know you stand up. I was just mad. Oh, the I didn't get Tayo, payo, dinga, parang, min, gitan nagar, minang, girit nagar, harsh, harsh, jash, gayo, payo, dinga, parang, payo, dinga, Usha Mataji, very devotional and classic bhajan. So thank you, Dr. Pulakiti. Thank you, Usha Mataji. For our next program, I'm going to invite Atul Gambhirji to the podium for his speech. Namaste, everyone. So first of all, I wanted to certainly wish both of the two girls a happy birthday, and also to their family members. I know it's a special occasion, and they are essentially the next light of the temple. So certainly, I'm glad that they're hearing all the special bhajans that are being sung, for example, today by Dr. Kalati as well as Shamantaji. And each one of these bhajans, they have a lot of meaning to them. They, carry that meaning of, again, gyan, getting the gyan from the Veds, right? And thanking God for that gyan that no one can take away from them.
right? So in that context, Gyan is about, again, knowledge, and which leads to wisdom, right? So I'm sure you can understand that in some of the contexts, especially of these bhajans, it's hard to understand unless if you know him, right? Or but at least I did want to kind of share that both of those were lovely bhajans. So thank you very much. And with that said, I'm going to move on to my talk as well. So my talk is about the purpose of life according to Vedas. So at some point or another, each one of us have at least thought through some of these questions. So if we can move on to the next slide. So, these common set of questions to come to our mind at some point or another in our life. And sometimes it's earlier in life, sometimes it's as we, become, young adults, and sometimes it's later in life, right? And how we relate to them, it's very different based on our stages of life. So, as over a period of time, we start to become self-aware and start to understand the meaning of life to a certain degree, how we understand it. And we always start to question, who am I, right? And anytime we're talking about who am I, what we're trying to get to is really our identity. We're trying to identify who we are and who not necessarily just our name, but as Acharyaji has, I think, done one of the perversions on the self, right? It's what our soul is, right? Basically, we ourselves are not just our name, but also our soul. That's all part of our consciousness and our identity. And why am I here, right? So that's also another common thing that as we start to question, we start to look at our belongings, right? Where do we belong? Where in society, where in the world do we belong? And based on that, we start to look at our purpose, what our role is, what our role is in every aspect of life, our relationships, and to a certain degree, we relate to things based on our short-term purposes. And over a period of time, we start to look at our long-term purpose, right? What is our long-term purpose and goal in life, right? And that's when we start to look at, things that, and that's where we start to look at answers to our questions. And I'll get into the Vedas in just a few minutes, but I wanted to kind of start off with the foundation, right? And now, as we look at our life and our life purpose, we certainly look at, what are the things that we are supposed to accomplish in life, right? And each one of us have a different journey, right? I mean, we all come back to the same end, but each one of us are going through our own set of journeys in life to understand these fundamental questions. And then based on that, relate to them as we understand, as we gain our knowledge. Now, with that said, I wanted to kind of start off with, as we are seeking, these questions, we have to have a moral compass which allows us to build our purpose, right? So, and that's where, of course, the key foundation comes in within the teaching of the Vedas. So can we move on to the next slide? Okay. So, and again, most of us know this, so it's not like I am, sharing the things that we do not know, but it's just a different perspective, right? So ultimately, we're trying to learn from each other's perspective in life and from each other's experiences. Now, I'm just going to go through some of the basics. So dharma, again, that is essentially the foundation around righteousness, right? That those are our moral values, right? That we learn from the Vedas. And of course, based on that, we understand what our duties are to ourselves, to our loved ones, to our families, to the society, to the world.
And as part of the dharma, again, that's the first foundation that we start to understand. Now, after that, then we start to look at what is karma. Now, karma are our actions that have consequences. Therefore, they are our responsibilities, right? So any of the actions that we take, those are truly, to a certain degree, if I do certain set of actions, now the responsibility of whether it leads to a consequence which is good or bad, that's part of that is really left up to me as well, right? So if I am making a conscious decision to, let's say, again, give my time and effort to the temple, that is my conscious effort, which is leading to good karma, right? Or if I make a decision to be able to do wrong things, right? To be able to, let's say, to be able to promote hate. Now, that's essentially a bad karma, which is leading to bad actions. And in certain cases, those good actions or bad actions influence each other as well, right? Because however we share these thoughts, that's how we influence each other to do good or to do bad. So it's not just about us and our actions, it's also how we're influencing others to be able to do their actions. Now, with that said, again, yoga and meditation are to help us connect with our body, with our mind, and with our soul. And it's basically to calm our mind, right? And to get an inner understanding of ourselves, inner awareness of ourselves, and slowly but surely, attain that spirituality. Now, Veda also teaches us around ahimsa, right? And that's making sure that you are doing non-violence towards any living beings, any living creatures. So again, you're kind and compassionate. So essentially, the theme there is you want to make sure that you're respectful and kind and compassionate toward other living creatures. And now Vedanta is really our inner understanding, right? So we're looking at our introspect to be able to self-realize, and as part of that introspection, we're doing self-inquiry as well to understand and then to be able to get a better grasp and in over a period of time become wise as part of that. Now, universal consciousness, we understand, again, the unity in all of us, the diversity and the divinity, right? Each one of us has a portion of that divinity. So therefore, we need to make sure that we are sharing that divinity in each one of us. Every time that we do Namaste, we're bowing, to each other's, soul, right? So part of that is really that divinity. We want to make sure that we're understanding, hey, we're all one. There's not, that individuality. A lot of times we give each other by giving each other names, right? But ultimately, we're all souls. We are all souls that are brought here for a purpose. And we'll get into the purpose aspect. Now, seva. Seva is your selfless action, selfless service to society. And it's basically, anytime when you do selfless deeds, that helps you purify your mind. So in some sense, you're helping yourself. It's not just about helping others, you're helping society and you're helping yourself. So for example, when you mow your lawn, right? You're helping get yourself exercise. So it's not like you're just saving yourself money or whatnot, right? But again, same thing with seva, right? Seva is really that selfless action to be able to help others and to be able to help society. Now, then I did want to kind of briefly talk about that as well. Those are our debts that we have to pay within society. And again, some of those debts are to our deities, right? So someone who has given something to us. And could be to our parents. It could be to our scholars, to our ancestors, to our teachers, and also to society. One of the things that one of my son mentioned was that, there is a bit which is also to the government, right? Which is part of society. He mentioned the concept of taxes, right? So ultimately, when we're talking about ren, we're talking about our ren to our, soul's ren
to society, right? As we're living this life, as we have been born as a human being, we have to make sure that we're at least clearing up our debt to the world. Now, with that said, again, these teachings from the Vedas provide us a comprehensive framework, and it leads to building that purpose within life, and it fosters that harmony within the world and within oneself. Now, I wanted to get into a few other things. Can we move on to the next slide for a minute? Now, life's goals according to Vedas. So before we get into these goals, I wanted to stress a little bit about, again, the difference between what is a goal and what is a purpose. Now, goals are what we are going to achieve, and based on specific set of measurable objectives that are laid out, right? So some of these goals that we're talking about from Vedas, these are objectives. These are clear things that we need to address. Now, some of our goals, just at a normal life level, could be, hey, my goal is to be able to get thin, right? And how am I going to get thin? Now, I'm going to exercise, right? So some of these goals, or a goal could be, hey, I want to live a healthy life. So therefore, these are the actions that I'm going to take to be able to attain that. Now, when we start to look at our goals from the lens of Ved, now Ved talk about what we just briefly talked about, which is the dharma, right? Which is our righteous actions. And ultimately, we want to make sure that our actions, again, lead to, ultimately what we just talked about earlier was that whatever our actions are, we can impact others based off of those actions, right? We have to own up to those actions. So essentially, our dharma gives us the code from a righteousness perspective, but ultimately we have to choose what that happens. Now, art, which is again wealth and prosperity, we need that to be able to attain these rules of life. Calm, which is again our desires, we need to make sure that we're fulfilling those through righteous means. Again, we're making an active decision to make sure that we're doing each one of these things through a righteous means. So again, if we're, let's say, gaining wealth, we want to make sure that we're gaining wealth through doing right things rather than stealing from someone. You can gain wealth through other means. It's just that you have to make an active decision to be able to gain wealth through righteous actions. Now, same thing with calm, which is really the desires. You want to make sure that you're filling those also through righteous means. And ultimately that leads to moksha, which is your liberation. Now, at a high level, what we're talking about is, again, these are goals that are defined for us. But I want to also kind of define what is our purpose. So again, going back to our discussion around purpose aspect, right? So our purpose is really a cumulative effect of those meaningful goals. So whatever we consider as meaningful, that's our purpose is most of the times intangible, right? So these the purpose is driven by these guiding principles, right? So essentially, we are using the guiding principles as a compass to be able to attain those, to be able to attain our goal. So again, a purpose is really clearly defined as those cumulative, meaningful goals. So let's just continue on. So let's move on to the next slide. So what I wanted to spend a little bit of time on was discovery of our purpose, right? So how do we discover what our purpose was, right? So again, one of the things that I started off with was that each one of us are on our own journey, right? So as we're going through our own respective journeys,
we're trying to understand, hey, what is essentially our purpose in life? So each one of us has to define our purpose based on our strengths, based on our gyan that we have received, right? Based on our knowledge that we have collected, based on the morals that we have built through all the teachers that have guided us. Now, with that, again, I wanted to kind of lay out how do we discover our own purpose, right? And so one of the ways that we start off with is really developing a growth mindset. Now, what does that mean? What that means is every single day we try to look at a better self. So we start to look at introspect and we start to improve ourselves. Now, that growth mindset comes from looking to every single morning, I know all of us do prayers, right? As we do our prayers, we start to see what can I do better today compared to what I did yesterday. So that gets into really that growth mindset. Now, the next is really focusing on your core values. Can we go back? So our core values are really those key set of code of conduct, as well as those meaningful values that we have received. And based on that, we determine what's important to us. And we focus on those values, and those values could get into, again, giving back, right? So ultimately, giving back doesn't have to be that you have to give back, through monetary means. You can give back through seva, right? You can give back through your service. You can even give back through just giving happiness to others. It doesn't have to be anything material. It could be anything which is immaterial as well. So ultimately, you're giving back from one soul to another. You're not just giving back material things. It doesn't always have to be material things. So again, you can spread happiness. You can spread kindness. So all of these things are part of giving back. So ultimately, it all gets back to what your role is within society, and based on where you are, what can you do for society? Practice gratitude. That's another key element that gets into finding our purpose, right? You always have to be thankful. And at the end of every single prayer, we thank God. So part of that is not just thanking God, but thanking each other, right? Because family, as we all know, that we're going through our own set of journeys. So as things change within our life, there are certain members of family that are going to be with us, some are not, right? So we have to always be thankful to each other and thankful for each other, in terms of what each one of us are giving each other, right? So, and these are the common basic set of things that we teach our kids. So, the unfortunate thing is that as we grow up, sometimes we forget, right? But we teach, and I would say I've never met a parent that has never taught these key set of, core values. And then of course, part of this is of course sharing your purpose. So again, you want to share what you thought, and then also be part of a community, kind of how we are, right? So being part of community brings that strength. So I just have one last slide, then after that. And again, living a purposeful life. And again, I'm not going to read through each one of these. You can certainly go through this yourself. Ultimately, each one of these things are important, right? You want to be kind. You need to make sure that you're doing the righteous things, right? So ultimately, your life is a journey, and it's not a finish line, right? So we are trying to, as we're going through that journey, we're using Vedas as our compass, as I described earlier, and we're using that compass to understand ourselves, understand each other, and also, being able to better society. And I would say I just wanted to take just the last two items, which is don't be judgmental and don't compare each other, right? Always try to do better and always try to improve yourself. So ultimately, it's all about improving oneself and improving society as part of that. Thank you very much.
Thank you, Atulji, for that wonderful lecture. So, speaking about the purpose of life is never an easy task. It's such a huge topic, and the organized and simple way in which you did that was good. And one line that I really liked was, "Life is a journey and Vedas are our compass." That I think that really sums up, right, the way that we should live our life. You talked about Vedic framework and how the Vedas talk about our purpose of life, and then tied that all together at the end to how we can use that practically. I don't know if anyone's ever told you this, but your voice is very resonant, like really calm and peaceful. So if you ever did a podcast, I would definitely listen to it. Before we move on, Mukta Didi and Asha aren't here right now, but whenever they do come back, I think we'll come back for Aarti or something. We'll all come together and say happy birthday, Asha. Okay? So whenever they're back, not right now though. For our next program, I wanted to ask Rujita to sing her bhajan. Namaste ji. एक है जीवन हमारा, ओम प्राण जय ओम का जल करने ओम ज्ञान शुद्ध अपना मन करे जीवन प्राण Thank you, Rujita, for that beautiful bhajan. I don't know what the word is, but in her voice, there's this simplicity, this like purity, right? That it's hard to find, but whenever someone sings with that purity, that simplicity, it really creates like an atmosphere of peace, of calm. So thank you, Rujita. That was beautiful. Now, Ajahn Amol Kumarji's speech on Sanskar, the series continues, and this week it is Samavata Sanskar. Ajahn. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Today we will discuss about Samavata Sanskar.
the Samartha Sanskar, also known as the completion of study, is a significant ceremony in the Vedic tradition that symbolizes the completion of formal education and the transition into adulthood. Swami Dayananda Saraswati, the founder of Arya Samaj and a renowned Vedic scholar, emphasizes the importance of this sanskar as a milestone in one's life. As the 12th sacrament out of 16, Samartha Sanskar aims to provide guidance to students on how to navigate daily life after completing their studies. It represents the completion of their educational journey, including the study of Veda, scripture, and other disciplines. During the Samartha Sanskar, students seek blessings from their teachers, gurus, and elders. This ceremony expresses profound gratitude towards those who have important knowledge and wisdom throughout their education journey. It serves as an opportunity for students to show reverence, seek guidance for the future, and receive blessings from their mentors. Moreover, as students completed their studies and prepare to enter the next phase of life, which may involve assuming professional or societal responsibilities, they receive knowledge in according with religious teachings. This guidance emphasizes the importance of associating with virtuous individuals, particularly in married life, to avoid negative influence of seek prosperity. It emphasizes the significance of teamwork and maintaining good behavior in various relationships and endeavors. The prescriptor also advises unmarried individuals that wealth, reputation, knowledge, intellect, and good moral conduct are crucial for achieving objectives. Purpose of these assets bringing positive outcomes. While misuse can be harmful, the preceptor imparts this knowledge during the Samarthan Sanskar, recognizing the challenges faced in married life and the need for self-control. Swami Dayananda Saraswati underscored the importance of utilizing the knowledge gaining during the educational journey for the betterment of society. The Samartha Sanskar serve as a reminder that education should extend beyond personal gain and contribute to the upliftment of others and the world. The ceremony encourages students to cultivate a sense of duty, integrity, and social responsibility as they transition into the next phase of their lives. From the students' perspective, they express gratitude towards their preceptors, acknowledging the significant service rendered in removing ignorance and shaping them into learned individuals. They owe the past on the knowledge and express a commitment to making other students happy while never forgetting a preceptor's contribution. The student also offer a prayer to the Almighty Ishwar, seeking well-behaved, knowledgeable, and empowered individuals who study and teach as well as the world filled with happiness and peace. The prayer encompasses the desire for righteous actions, good health, longevity, and assimilation of godly qualities into their lives. In conclusion, Samartha Sanskar, in the line with Swami Dayananda Saraswati's teachings, significances, and compassions of formal education and preparation for a responsible and purposeful life. It emphasizes gratitude, introspection, and the utilization of knowledge for the betterment of society. The ceremony acts as a transformative movement, guiding students toward a life of service, moral values,
and ethical conduct in your personal and professional pursuits. As you see, as per Vedic tradition, Samavartan is a real graduation ceremony. I hope the explanation inspire many of us to set great example of celebration the graduation in the traditional Vedic way. That's how we can enliven these values in our family and community. स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संस्कार विधि में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। समावर्तन संस्कार, समावर्तन अर्थात जब विद्यार्थी विद्या से युक्त हो जाता है, उसके पश्चात जो विधि संपन्न की जाती है उसको समावर्तन विधि कहा गया है, समावर्तन संस्कार कहा गया है। जब उसका वेदारंभ संस्कार होता है बालक का, जब माता पिता उसको गुरुकुल में प्रवेश देते हैं, उस समय पिता का वहां पर बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है कि आपको गुरुकुल में किस प्रकार का जीवन जीना है। और जब प्रवेश कर जाता है और 14 वर्ष की शिक्षा को प्राप्त करके, देखिए आज भी ग्रेजुएशन जो है वो लगभग हमारी बीए पास को ही हम मोस्टली ग्रेजुएशन कहते हैं, या 10वीं 12वीं को भी यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन भारत में जो ग्रेजुएट है जिसको हम पदवीधर कहते हैं वो बीए की डिग्री या बैचलर डिग्री को ही माना जाता है। और पहली क्लास से या दूसरी क्लास से देखेंगे तो 14 वर्ष का समय एक बैचलर डिग्री को धारण करने में लगता ही है। तो हमारे ऋषियों ने कहा जब बालक गुरुकुल में प्रवेश कर जाए और 14 वर्ष का अध्ययन करने के पश्चात जब वो गुरुकुल से घर की ओर निकलता है या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने निकलता है, उस समय गुरु वहां पर अपने गुरुकुल में एक विधि करता है जिसको समावर्तन विधि का, समावर्तन संस्कार का, और वहां पर गुरु उपदेश देता है। देखिए जब गुरुकुल में आ गया तो पिता का उपदेश है कि गुरुकुल में कैसे रहना, और जब गुरुकुल के गुरु के पास सानिध्य में गुरुकुल में 14 वर्ष अध्ययन किया, वो समाज में जाना है। एक छोटा सा समाज था, गुरुकुल एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर लिमिटेड लोगों के बीच में था। अब उसका एक बड़ा रूप आपको सामने दिखाई देगा, समाज सोसाइटी में जाना है। तो सोसाइटी में जाएंगे तो किस प्रकार का व्यवहार करना, क्योंकि समाज में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छी संगति मिलेगी, कुसंगति भी मिलेगी। तो आपकी वहां पर परीक्षा है, जो आपने विद्या अध्ययन किया, जो आपने नॉलेज गेन किया, जो विद्या आपने प्राप्त की, उसका प्रैक्टिकल करने का समय है अब आपका समाज में जाने। और वहां पर कभी कभी विधि वहां पर थी कि समावर्तन संस्कार के साथ साथ विवाह संस्कार का भी विधान है, चाहे तो गुरु उस बालक का सीधा विवाह कर दे या फिर घर जाकर के माता पिता के समक्ष वो विवाह संस्कार संपन्न होता। तो वहां पर गुरु क्या उपदेश देता है, बहुत अच्छा संस्कार है, कभी समय मिले संस्कार विधि में जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कहता है कि इस वातावरण में हमने तुम्हारा उत्तम चरित्र का निर्माण किया, तुम्हें एक उत्तम नागरिक बनाने का हमने प्रयत्न किया। अब सोसाइटी में आप जाओगे तो सोसाइटी में जाते वक्त उपदेश देते हुए तैतरीय उपनिषद का उपदेश है। एक हमारी 11 उपनिषद जो है, वैसे कहने को 100 से अधिक उपनिषद है, लेकिन प्रमाणित विधान जो 11 उपनिषद है, ईश के कट इत्यादि जो 11 उसमें तैतरीय उपनिषद, उस तैतरीय उपनिषद के अंदर गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है, वही उपदेश समावर्तन संस्कार में A to Z वहां पर बताया है। तो पहला उपदेश होता है कि संसार में जाओगे, समाज में जाओगे तो सत्यम वद, कि आपको सदैव सत्य का पक्ष रखना है और सत्य ही बोलना है। क्योंकि समाज में जाओगे तो लोग क्या कहते हैं, गुरुकुल में जो पढ़ा तुमने पढ़ा वहां की शिक्षा वहीं पर रहने दो, समाज में रहना तो थोड़ा मोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन गुरु कहता है कि थोड़ा सा झूठ तुम्हें थोड़े समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन बाद में दुख का कारण भी बन सकता है। लेकिन सत्य का साथ लोगे तो थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन जीवन आपका बहुत अच्छा जाएगा। लोगों की संतुष्टि नहीं, हमारी अपनी संतुष्टि होती है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे आप क्या मुक्त हो जाते हैं कि हमने सत्य बोल दिया, मुझे कोई जरूरत किसी चीज की उसका आवरण बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो उसे परेशानी रहती है कि आगे वाला व्यक्ति कहीं मेरा झूठ ना पकड़ ले, उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलता है, एक आवरण लगाता है और झूठ बोलता है, तो वो झूठ आपको बार बार परेशान जरूर करेगा। तो गुरु कहता है कि जो विद्या तुमने पढ़ी है, जो धार्मिक शिक्षा तुमने पढ़ी है, उसका जीवन में पालन भी करना। इसलिए सत्यम वद, कि सदैव सत्य का पक्ष ही आपको रखना है, सत्य का समर्थन करना है, अपने जीवन में सत्य को धारण करना। फिर दूसरा उपदेश है धर्मम चर, कि तुम्हें धर्म का आचरण करना है। क्योंकि जो विद्या तुमने पढ़ी वो धार्मिक विद्या थी, तुम्हारा आध्यात्मिक भौतिक विकास के लिए भी हमने विद्याएं पढ़ाई,
भौतिक नॉलेज भी तुमको दिया है कि तुम्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को, व्यापार को, व्यवसाय को, नौकरी को, जिस फील्ड में जाओगे कैसे उस भौतिक उन्नति को करके बहुत सारा धन कमाओगे, लेकिन साथ में तुम्हें हमने आध्यात्मिक विद्या ही पढ़ाई है। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बड़ा नॉलेज हमने तुम्हें दिया है। तो आगे तुम्हें सत्य का ही पालन करना और साथ में धर्म का आचरण करना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचरण से विमुक्त, आचरण रहित हो जाता है, सदाचार से रहित हो जाता है, दुराचार से युक्त हो जाता है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। जो तुमने एजुकेशन ली वो धर्म पूर्वक आचरण के लिए, तो समाज में जाके धर्म पूर्वक आचरण करना और सदैव धर्म का ही आचरण करने रहे। तीसरी शिक्षा देते हैं स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय मां प्रमदः। इस स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि एक होता है जो कॉलेज में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा पढ़ लिया कि जीवन भर पढ़ते रहेंगे। तो वहां पर गुरु कहता है नहीं, विद्या ऐसी चीज हो जो जीवन भर पढ़ोगे तब भी कभी समाप्त नहीं होगी। जितना विद्या को पढ़ते जाओगे उतनी तुम्हारी बुद्धि और विकसित होगी और तुम्हारा नॉलेज बढ़ता रहेगा। विद्या रूपी ऐसा धन है कि बचपन से आप शुरू करो, अंतिम अवस्था तक पढ़ते जाओ, कभी भी आपको वह नुकसान नहीं देगी। विद्या आपको लाभ ही लाभ देगी। और संसार में इतनी विद्या है जिसको पढ़ते जाओगे तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन साथ साथ स्वाध्याय के अंदर स्वाध्ययन भी करते जाना। एक तो स्वाध्याय होगा उत्तम ग्रंथों का, वेद उपनिषद दर्शन, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए। भौतिक विद्या तो हमने पढ़ ली जिससे हम बिजनेस करते हैं, पर आज भौतिक विद्या भी बड़ी कठिन हो गई। हर 15 दिन में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, हर नई 15 दिन बाद कोई ना कोई उसमें नई चीज आ जाती है, तो वो सीखोगे नहीं तो पीछे ही रह जाओगे। और बाद में जब समय आएगा कहीं दूसरी जगह हम इंटरव्यू देते तो वहां पर फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी पूछेंगे, हम पुरानी को लेके बैठे। तो जो स्वाध्याय है ग्रंथों का, भौतिक जो स्वाध्याय है वो भी आपका होना चाहिए, नॉलेज बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, और स्वाध्याय अपना अध्ययन भी अनवरत रूप से चला के रखना है। इसलिए आत्मचिंतन की जो परिभाषा की गई है कि हम आत्मचिंतन प्रतिदिन करें कि मैंने जो पढ़ा, जिन शास्त्रों को पढ़ा, क्या मेरा आचरण उसके अनुकूल हो रहा है। मैं सुबह से शाम तक जो जो मैंने आचरण किया, चाहे वो परिवार के अंदर हो, स्वयं के प्रति हो, समाज में उतर करके हो, व्यापार में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, क्या उन चीजों को मैंने धारण किया या उसके विपरीत आचरण किए। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रतिदिन स्वाध्याय अपना भी करूं, और अपने स्वाध्याय के द्वारा मैं जानूं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर मुझसे गलत हुआ है तो उसका प्रायश्चित करूं और आगे सही जानने का मैं प्रयत्न करूं। वहां पर बहुत बड़ी, अब वहां पर चर्चा वहां पर है, तैतृय उपनिषद के अंदर बड़ी चर्चा है। और एक आचार्य वचन लेता है कि आचार्य प्रियम धनम आहित प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, कि मुझे सदैव धन देते रहे। तो धन कौन सा है? आचार्य को क्या वो मनी चाहिए कि आप हर महीने कमाओ उसमें से कंट्रीब्यूट करो? नहीं, उसकी तो शिष्य ही उसका धन होते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार आप मेरे पास आकर के पढ़े, विद्या को पढ़ा, तो आने वाली पीढ़ियों को भी मेरे पास भेजना, वो धन मुझे चाहिए। कि वहीं तक सीमित नहीं रहना कि आप पढ़ लिए, लेकिन अपनी संतान को, उसकी संतान को, और समाज में जो बालक है, बालिका है, उनको इस विद्या को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजना, यही मेरी दक्षिणा है। और आगे श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारा उपदेश वहां पर हमें वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो कभी समय निकालकर अपने ग्रंथों को पढ़े, इन उपनिषदों को पढ़े, उसके अंदर बड़ी अच्छी शिक्षा है, उसको धारण करने का प्रयत्न करें। समय को अधिक ना लेता हुआ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है, अवश्य में आप इसका स्वाध्याय करें, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शांति शांति शांति। Thank you, Ajay, for your address. Before we move on to the next program, I'd like to go through our daily announcements or weekly announcements. You just heard Ajay Kumarji speak. He is our resident priest at Greater Atlanta Vedic Temple. He does priest services like if you have a birthday, a housewarming, wedding, whatever important occasions you might have in your family, you can invite Ajay Kumarji to help come conduct a puja, a havan for you guys for blessings. Besides that, we have Vedic Sanskriti School. Right now we're in summer vacation, but the admissions are open for classes from 2023 to 2024. VSS is an initiative which helps children culturally connect to their roots, to other children,
have fun, learn everything every Sunday at Temple. It goes with the school year, so from August to May-ish, I think. So for questions about that, you can contact Sugandha ji or Vinny ji. After that, we have kids play hour that is every Thursday and Friday, 6:30 to 7:30 p.m. Kids come to Temple and connect with other kids and play. So if you want your kids to have fun, just connect with other kids. Come to Temple Thursday, Friday, 6:30, 7:30 p.m. Next, we have a women's Vedic study circle. This happens every first and third Saturday of the month from 4 p.m. to 5 p.m. This is led by Anunya Aditi. You can contact her for any questions about it. We also have the APSA, Arya Pratinidhi Sabha America Arya Mahasammelan Karega, which is like an international conference of Arya Samajas and people who are connected to Arya Samaj from all across the world. People come from India, Mauritius, Australia, Canada, wherever people come from, and everyone connects. This year it's in Houston, Texas. So you can contact Vishwadhariji or go to their website to register for that and have an experience that I think is really unique. It happens once every year, and you get to connect with a bunch of new people, all of us who share the same ideology. We also have yoga and meditation sessions every Saturday from 8:30 to 9:30 a.m. And if you guys have any special occasions in your family, you guys can come be Yajman every Sunday here, like Mukta Didi and Asha did today. And you guys can celebrate those occasions with the rest of your temple family and get those blessings. With all that done, let's move on to meditation by association. Namaste everyone. Please sit straight. Close your eyes. Relax your face, neck, and shoulder. Relax. We'll recite Om 3 times. Inhale. Om. Second time, inhale. Om. Third time. Om. You keep breathing for a few seconds. Inhale deeply and exhale slowly. Pure and eternal soul. So, for sake of your own peace and happiness, please drop all mental negativities, such as habit of comparing yourself with others, anger, greed, lust, grudges, malice, drop all. Inhale deeply.
Exhale slowly. Again, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now inhale deeply. Exhale forcefully. Hold. Hold your breath outside as per your comfort. Focus your attention on holding state. Do normal breathing for a few times. Now, focus your attention in your nostrils. Watch your breath going inside and outside. Do deep breathing with this. Be present, Ishwar, God, is giver of this breath. Accept this. Accept His holy presence within you. By maintaining this awareness that Ishwar is within us, please recite Om in your mind at your own pace.
Pray for everyone's peace and happiness. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Pray. We all are children of one divine mother. We all belong to one family. Feel that oneness in others. Feel grateful that you got an opportunity to meditate. Prepare yourself to come out of this meditation practice. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Cover your eyes with your palms. Open your eyes. Remove your palms. Final thing to acknowledge is Mukta Devi and Asha sponsored today, and Mukta Devi has donated $2,000 to the temple on occasion of Asha's birthday. So let's have a round of applause to them. Let's all stand up for the Ivy. Jai Jagadish Hare Sai Jai Jai Bhakti Jai Om Jai Jagadish It's
शांति पाठ शांति पाठ देव शांति शांति शांतिरोक्षदयन शांति वनस्पतय शांति शाम शीरेधि ओम शांति वीर 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 को पीछे मीनिंग O God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful. The entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. भोजन Father Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energy producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy giving food. आर्य समान वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते One important thing that I want to draw your attention about is, I have a book in my hand. The book name is
Quran par swasth chintan, healthy reasoning on Quran, right? So there are a lot of